वेलकम बैक टू हैंड प्रिंट बाय सीमा दौलत। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी वीडियो। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा पिकॉक। ये मैंने किस तरह से कलर किया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें वाइट कलर से बेस बना लूँगी। वाइट कलर का बेस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक कलर का यूज़ किया है। जो मेरा फैब्रिक है वो ब्लैक कलर का है और उस पर वाइट कलर करने के बाद ही दूसरे कलर आसानी से दिखाई देंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें नॉर्मल पिकॉक कलर यूज़ ना करके किस डिफरेंट कलर को यूज़ किया है। मैं इसमें हाफ कर ही कलर करूँगी क्योंकि पूरा ये मेरे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर ही कलर करूँ। वाइट कलर का बेस बनाने के बाद मैंने इसमें पिंक कलर से हल्की हल्की सी शेड दी है जिससे कि इसका एक डिफरेंट सा लुक नज़र आए। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी शेडिंग कर दूंगी। इसका फाइनल लुक देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आप देखिएगा कि ये क्या शानदार बनकर तैयार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कलर करूँगी जैसे मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में ऐसे कलर किया था। ये हमारा पिंक शेड में पिकॉक बनने के लिए तैयार है।
ये देखिए है ना थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन। अब मैं इसमें इसके ग्रीन पार्ट को कलर कर लूँगी। ये दोनों का पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। देखिए इसका फाइनल लुक अब तैयार होने वाला है। इस तरह का डिज़ाइन आप किसी भी साड़ी या दुपट्टे पर आसानी से बना सकते हैं। साड़ी पर बनाएंगे तो आप ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। इस पिकॉक की ख़ास बात ये है कि एक बहुत ही डिफरेंट कलर शेड में बनाया है मैंने, और ये पूरा का पूरा एक पिंक कलर में बनकर तैयार हुआ है। अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पिकॉक कैसा लगा
और इसमें जो मैंने कलर किया है उनका कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा। Thanks for watching.